जी दोस्तों, वेल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया है और ये आपको नज़र आ रहा है अल्टो VXR का जो इंजन रूम का जो राइट साइड का हिस्सा है, गाड़ी कहते हैं जो उसके टोपे के नीचे वहाँ पे अभी क्रैक था और वेल्ड उसी वेल्ड हुआ नहीं था। दोबारा से इस तरह रिपेयर होने वाला है। क्यों जी सामने बैक अस्सलाम वालेकुम। गैप आ गया था तो अभी स्पॉट लगा रहे हैं। स्पॉट लगाने ज़रूरी होते हैं। फ्रेम की वेल्डिंग हो रही है। जो इंजन रूम है उसका जो राइट साइड वाला फ्रेम का जो है वो ये इंजन रूम का लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड बड़ी मेहनत से चल रहा है। बड़ा बारीकी वाला काम। अच्छा
फैक्ट्री लेवल से काम हो रहा है आप लोगों के सामने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल से आपको मिलते हैं तरह तरह की वीडियोस गाड़ियों के बारे में, मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली, डेंटिंग, पेंटिंग, हता के होम अप्लायंसेस आइटम्स की रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी मैं करता रहता हूँ, जिसमें वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, यूपीएस, बैटरी चार्जिंग इशू, जिग-जैग मशीन हो गया, आपका ओवन हो गया, किसी भी आइटम में कोई मसला होता है तो आप मेरे वीडियो चैनल से आपको उस तरह की वीडियोस मिल सकती हैं, टिप्स वहाँ से आप तस्वीर हो सकते हैं। गार्डरी भी वेल्डिंग का काम जारी है, फ्रंट गार्डरी